60%, when it is 15 to 60% in UPA government. The government is boast about Atmanirbhar Bharat, but its import in China has increased to whopping 83%. This is make in India or made in China. Honorable Chairman, Madam, I would like to understand what kind of tax structure is this. It is blatantly robbed the poor, farmers, common people and manufacturer, but outrightly benefits the corporate. The government posts about agriculture growth, but reality tells a different story. Over 55% of farmers drowning in debt, with an average burden of 91,231 rupees. Over 1 lakh farmers committed suicide since you assume office in 2014 up to 2022. After this no data, government has not sent any data out. Now, in the last 10 years, this government has given 26 lakh crore to the corporates in the form of bad loan waiver and corporate tax cut. Who's feeding this nation? Farmers or corporates? The government promised to double the farmers' income by 2022 and promised the legal guarantee to MSP. But now it's a forgotten promise because farmers don't buy electoral bonds to BJP. Honorable Speaker, sir, minorities in this country have systematically excluded, economically weakened, politically targeted. Pre-metric and post-metric scholarship for minority students have been slashed by 60% from 2,515 crore to just 1,689 crore. The Maulana Azad Fellowship have been completely scrapped. Funds for the Ministry of Minority Affairs reduced by 2,000 crores when compared to UPA government. This is not a development. This is an economic blockade against minorities. Honorable Speaker, Madam, there is a systematic discrimination against my state of Tamil Nadu. We are among the top performing states in the manufacturing, IT and export. We contribute significantly to the national exchequer through tax. Yet, what do we get in return? We are completely targeted, systematically discriminated and face the betrayal and unfair treatment. The government is not just neglecting Tamil Nadu, but it actively punishing us for being successful, politically independent and progressive. If we think this financial bill is an economic document, we are mistaken. This is a political weapon in the hands of ruling party used to suppress the state that do not align with the ideology of the BJP, which is divisive and hateful. I'm finishing mid, madam. Tamil Nadu is a state that believes in self-respect, federalism, social justice and people welfare. But this government wants to control state like Tamil Nadu through economic blackmail. I will say with all humility that if you will never win this battle, madam, Honorable Chairman, madam, to sum up, this finance bill is a document of discrimination, corporate favoritism and economic oppression. This is not Amrit Kaal, this is a Vikat Kaal, an era of destruction, deception and distress. Thank you. Very good. माननीय सदस्य श्री धीर सिंह माने जी है नहीं क्या? माननीय सदस्य श्री धीर सिंह माने जी। नमस्कार, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में फाइनेंस बिल 2025 पे बोलने का मौका दिया। आज भारत देश एक नई प्रगति की आयाम छू रहा है और इस रफ्तार को आगे ले जाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से मैं आपका ध्यान अनेक चीजों पर आकर्षित करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूंगा श्री मोदी जी का कि थर्सडे को उन्होंने छावा नामक जो मूवी देश में चल रही है उसको पार्लियामेंट में दिखाने का निर्णय लिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। लेकिन सर, मैडम, कई ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब का पुरस्कार करते हैं, वो ये मूवी यहां लगाने नहीं चाहते। जिस शिवपुत्र संभाजी ने अपना प्राण इस देश के लिए, देव देश आणि धर्मासाठी ज्यांनी प्राण या देशामध्ये त्यागले, त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सुपुत्राचा, त्या छाव्याचा चित्रपट आज देशाच्या संसदेमध्ये लागतोय, याचा सार्थ अभिमान महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला आहे आणि मला गर्व आहे की संभाजी महाराजांचा छावा हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ही पार्लियामेंट मध्ये त्या ठिकाणी दाखवणार आहे। सर, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए जो नया रोल मॉडल आगे लेके प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, यह जज्बा उनको मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज से। टैक्सेशन सिस्टम तब के टाइम में जो हुआ करता था शिवाजी महाराज के टाइम में,
उसको इलैबोरेट करते हुए एक ही टैक्स लोगों पे होना चाहिए। बहुत अलग अलग टैक्स के सेक्शंस कांग्रेस के टाइम में यहाँ देश में चलते थे, लेकिन उसको अलग थलग दिखाते हुए उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जिसमें जीएसटी के माध्यम से हर एक टैक्स पेयर को उसमें लाया। टैक्स पेयर सिर्फ टैक्स नहीं भर रहा है सर मैडम, तो इस देश के प्रगति का भागीदार हो रहा है। एक विकसित भारत का स्वप्न जो लेके भारतवर्ष का आदमी आगे बढ़ रहा है, उसको आगे ले जाने का काम ये टैक्स पेयर कर रहा है। और उसको मालूम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहा है, वो रोड्स के माध्यम से हो, रेल्स के माध्यम से हो, बाल स्वास्थ्य के माध्यम से हो, महिलाओं की उन्नति के बारे में हो, हर जगह भारत एक नई ऊंचाई छू रहा है और उसके लिए एक रोड मैप लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। मैं निश्चित रूप से बजट में कुछ चीजें जो अच्छी की गई, उसमें 12 लाख रुपए का भुगतान जो करते हैं, 12 लाख का पगार जो लेते हैं या जिनकी आय 12 लाख के नीचे है, उनको टैक्स फ्री करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैडम, ये बहुत क्रांतिकारी निर्णय है जिसके माध्यम से आम आदमी की आय उसको टैक्स फ्री करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करा। जिसका सिर्फ 60,000 की आय जिसकी थी उसको टैक्स फ्री करने का काम कांग्रेस के शासनकाल में था, उसको 12 लाख तक ले जाने का काम नरेंद्र जी मोदी सरकार ने करा है। मैं इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से आपसे बात शेयर करते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा, जजिया कर लगा करता था मुगलिया सल्तनत में, और जजिया कर के लिए उसको प्रोत्साहन देने का काम इसने, जब ये जीएसटी आया तो इसे गब्बर टैक्स का नाम दिया गया, जजिया कर का नाम दिया गया। जिस औरंगजेब का पुरस्कार ये कर रहे हैं कर्नाटक सरकार में, एक तरफ यहां विपक्ष के नेता संविधान हाथ में लेके खड़े रहते हैं और कहते हैं कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कर्नाटक में संविधान बदलने की बात यही लोग करते हैं। मैं निषेध करता हूं ऐसी सरकार का जो संविधान को कटघरे में रखने का काम ये लोग कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के माध्यम से दिया हुआ संविधान इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, और उस संविधान को सर पे लगा के, दिल में बसा के प्रधानमंत्री जी आगे का दौरा कर रहे हैं। लेकिन इनको इस पे राजनीति करनी है, और इस राजनीति का टच कसने के लिए वो निचले स्तर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, कुछ 2 दिनों से आप टीवी पे देख रहे होंगे कि जिसका एक कमरा खाली है, वो जोकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के बारे में कुछ अनाप शराब बक रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से, कुछ नियम नीतियां बननी चाहिए सर, कुछ तो ड्रॉ लाइन होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करने से अच्छा आप नीतियों पे टिप्पणी करें तो उसका जरूर स्वागत होगा। कॉमेडी के नाम पे कई लोग अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक गांजा भूत नामक, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी का अगर गांजा भूत नाम हो तो समझ ले, वो यहां से स्क्रिप्ट लिख के देते हैं और महाराष्ट्र में कोई कॉमेडियन जोकर जाके वो स्टेज पे बौखला जाता है। मैं इस संसद के माध्यम से निश्चित रूप से डिमांड करना चाहूंगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बंदी लानी चाहिए, जिससे के माध्यम से हेट्रेड स्पीच या 2 लोगों में तनाव का वातावरण एक राज्य में बनते हुए देखा जाए। मैं कुछ मांगे आपके सामने सर मैडम यहां रखना चाहूंगा। नीतियां अच्छी बने तो और कारगर तरीके से काम होता रहता है। महाराष्ट्र के किसानों के लिए और डिमांड्स में यहां मैं अपने सामने रखना चाहूंगा। ट्रांसपेरेंट नीतियां बनने के लिए टैक्सेशन सिस्टम में सिंप्लीफाइड पना लाने की जरूरत आपने करी है, लेकिन उसमें सर खाद का जो यहां है, किसानों की खाद जो है उसको और कम करने की जरूरत है, जिसमें ज्यादा मुनाफा से किसानों को मिल सकता है। बहुत ज्यादा टैक्सेशन के माध्यम से, सर 2 मिनट मेरे बाकी है, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। किसानों की आय बढ़ने में उसका फायदा होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में 5% जीएसटी है, इनपुट्स के पहले 6% था, आज यहाँ 18% जीएसटी अमोनिया और रॉ मटेरियल पे लग रहा है। उसको अगर कम किया जाए तो निश्चित रूप से फर्टिलाइजर्स में उसका फायदा होगा। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की आखिर बात मैं यहाँ करके अपनी बातों को विराम दूंगा। मैडम, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में नागपुर रत्नागिरी हाईवे जा रहा है, जिसका काम अभी प्रगति पथ पर है। उस सेक्शन का एक चौकाक से आंकलिक तक का सेक्शन, हर चौराहे पे हर जगह 4 गुना मुआवजा दिया गया है, लेकिन उसी सेक्शन पे अन्याय करते हुए दुगना मुआवजा देने की सिफारिश हुई है। मैं केंद्र सरकार को इसमें इंटरवीन करने की विनती करता हूं। मैडम, 1 ही मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं कि उन लोगों पे अन्याय ना हो और किसानों ने जो अपनी जमीन दे रहे हैं उनको चौगना यहां मुंह बदला मिले, ऐसी मैं मांग।
माननीय सभापति महोदया, आपने वित्त विधेयक 2025 पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। मेरा ये मानना है किसी भी देश की प्रगति का जो प्रतिबिंबित करता है उसकी कर संरचना है, और हर देश की अलग अलग स्थितियां होती हैं। भारत एक किसानों का प्राथमिकता वाला देश है। हमें जो अपनी कर संरचना रखने की आवश्यकता है वो कृषि विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिए, लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। लेकिन दुखद बात है कि जो हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो सोच है, वो इनकी सोच है कि हम पहले कारपोरेट घराने को अगर बड़ा कर लेंगे तो देश समृद्धशाली हो जाएगा, देश विकसित हो जाएगा। अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो महात्मा गांधी जी का जो अर्थनीति थी उसके रास्ते पर चलना होगा। इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को मिटाकर समता बनाने का काम करना होगा। उसके लिए हमें रणनीति बनाने की आवश्यकता है। आज दुर्भाग्य की स्थिति है कि हमारे देश में जो असमानता है वो बड़े पैमाने पर है। विश्व में असमानता सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो भारत में है। आबादी के पास देश की कुल 1% आबादी के पास देश की कुल आय का 22.6% और कुल संपत्ति का 53% हिस्सा है। शेष 10% आबादी के पास कुल आय का 57% और संपत्ति का 27% हिस्सा है। इसके विपरीत निचली 50% आबादी के पास जीडीपी के केवल 13% और संपत्ति का 4.1% हिस्सा है। इतनी असमानता है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में समानता केवल जो संपत्ति विवरण तक सीमित नहीं है, बल्कि कर संरचना प्रणाली में भी इनका शहरी झलक दिखाई पड़ती है। ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार निचली 50% आबादी जो केवल 4.1% संपत्ति जिसके पास है वो जीएसटी का 64% भुगतान कर रही है, और दूसरी तरफ मध्य वर्ग जो 30% की अधिक है वो 30% जीएसटी का भुगतान कर रही है। इसके विपरीत देश की सबसे अमीर 10% आबादी केवल 5% से कम जीएसटी का भुगतान कर रहा। यानी जो हमारा कर संरचना है उसका सबसे ज्यादा असर वो कमजोर वर्गों के ऊपर पड़ रहा है, जो गरीब हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। उक्त आर्थिक असमानता के कारण आर्थिक नीतियों के असंतुलन का परिणाम है, जिसके कारण भारत में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, कर्ज में बढ़ोतरी, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। किसानों के जितने भी यंत्र हैं उस पर 18% जीएसटी लगाकर किसान की कमर तोड़ने का काम किया गया। पूरे देश में भी माननीय मंत्री जी से हमारे माननीय भदौरिया जी ने प्रश्न किया था कि किसान की आमदनी न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। इस पर जो है जवाब दिया, और जो दिया कि किसान जो है उसका परिवार की जो आय है वो 10,278 रुपया। इसको अगर महीने में आप उसको अगर 4 परिवार है एक में और उस पर विभाजन करने का काम करें तो 80 रुपए प्रतिदिन की उसकी आय है। इस तरह की हालत किसान की है, और उसके बाद भी किसान के ऊपर टैक्स लगाया गया। महोदया, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है तो निश्चित रूप से जो हमारी अर्थनीति है वो किसानों को प्राथमिकता देना चाहिए। आज किसानों की जमीन ली जाती है, ग्रहण की जाती है, उसका जो सर्किल रेट है पुराना है, जिसके कारण उनको मार्केट वैल्यू नहीं मिल पाती। उनका सस्ती जमीन लेकर उद्योग लगाने के लिए दिया जाता है। इसलिए हमारा ये मानना है जो देश के ऊपर इस अभी हमारे कई साथी जिक्र कर रहे थे कि देश की हमने आर्थिक स्थिति तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने का काम किया। हमारी जो इकोनॉमी है इस देश में 11 वर्षों से में लगभग
1,81,000 करोड़ 181 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा। निश्चित रूप से जहां पहले एक व्यक्ति पर 42,000 रुपए का कर्जा था, जो 140 करोड़ की आबादी माने, आज 1,42,000 का प्रत्येक व्यक्ति पर कर्जा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अगर हमें इसको ठीक करने का काम करना। सभापति महोदय, मैं अत्यंत आपका आभारी हूं कि आपने माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत फाइनेंस बिल के समर्थन में मुझे बोलने की अनुमति दी है। अभी मैं कल से काफ़ी सदस्य सत्ता पक्ष के हों प्रतिपक्ष के हों, मैं सभी के विचार सुन रहे थे। आखिर हमने जब बजट पास कर लिया, गिलेटिन कर लिया, उसके बाद फिर ये फाइनेंस बिल आता है, तो ये फाइनेंस बिल का जो उद्देश्य है वो क्या है? ये प्रतिवर्ष फाइनेंस बिल हमारी वित्त मंत्री लेकर के आती है और फाइनेंस बिल में जो फाइनेंशियल प्रपोजल्स होते हैं, पूरे वर्ष के जो फाइनेंशियल प्रस्ताव होते हैं, उसकी रूपरेखा होती है। जो फाइनेंस से रिलेटेड स्कीम्स होती हैं या जो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड जो एक्ट हैं, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो 61, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट हो 2017, कस्टम टैक्स हो 72, कस्टम टैरिफ एक्ट हो 75, सेंट्रल एक्साइज एक्ट हो 1944, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट हो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, ये सारे, इनमें अगर कोई बदलाव होता है, अगर कुछ इसमें फाइनेंस के मॉनेटरी बदलाव करते हैं, तो इसको और एक्ट के और स्कीम्स का सबका समावेश करके वर्ष के प्रारंभ में फाइनेंस बिल को लेकर के आते हैं। लेकिन मैं कल सुन रहा था अपने कांग्रेस के सम्मानित नेता डॉक्टर शशि थरूर को, जो उन्होंने इनिशिएट किया। उन्होंने कहा कि उदाहरण 3 चीज का दिया कि आई कुड नॉट फिक्स योर ब्रेक्स सो आई मेड योर हॉर्न लाउडर। फिर दूसरी बात कहा, आई कुड नॉट रिपेयर द रूफ एंड आई ब्रॉट यू एन अम्ब्रेला। एंड तीसरी बात कहा कि क्लासिक केस ऑफ पैच वर्क सोल्यूशंस। आखिर शशि थरूर जी विद्वान हैं, अगर वो ये कहें कि एक क्लासिक केस ऑफ पैच वर्क है या हम रूफ को रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो अम्ब्रेला मिला रहे हैं, अगर हम ब्रेक नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो हॉर्न हम तेज कर दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार छत को रिपेयर करने की बात नहीं करती है, बल्कि वित्तीय समावेशन से नई छत बनाने का काम करती है और उस छत से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। और मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं कि आखिर यही सदन है, आप भी थी सदस्य, वित्त मंत्री जी भी थे, पूरा दुनिया कहता था, दुनिया में भारत की निगाह क्या थी कि भारत की छवि एक बनाना रिपब्लिक की थी, कि बनाना रिपब्लिक है, न यहाँ पे इकोनॉमी स्ट्रांग है, न कोई एफडीआई कर रहा है, न कोई पूंजी निवेश कर रहा है। जिन्होंने पूंजी निवेश किया वो अपनी पूंजी को बाहर लेकर के जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। तो एक बनाना रिपब्लिक की इमेज कांग्रेस यूपीए की सरकार में थी। और आज शशि थरूर जी कह रहे हैं रिपेयर करने की बात। आज इस सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाना रिपब्लिक से निकाल करके इसको री इमर्जिंग इकोनॉमी किया है, जिसको पूरी दुनिया स्वीकार करे। और ये बात जगदम्बिका पाल नहीं कर रहे हैं कि ये री इमर्जिंग इकोनॉमी है। ये री इमर्जिंग इकोनॉमी दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री है, जो एंगस मेडिसिन, उस एंगस मेडिसिन ने कहा कि आज भारत की जो इकोनॉमी है आज वो री इमर्जिंग है। क्या ये नहीं बात थी कि टॉप 5 फ्रेजाइल में भारत की गिनती नहीं होती थी, कि भारत की इकोनॉमी दुनिया के टॉप 5 फ्रेजाइल में, गौरव जी भी इस पर सहमत है। तो टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी जो 14 तक कही जाती थी, आज वो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में भारत को लाने का काम किया है, कि ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं और अपने प्रधानमंत्री जी को। और ये बात नहीं है कि हम वहीं रुकने वाले हैं। जब विकसित भारत की बात अभी लालजी जी ने कहा, लालजी ने कहा, ज्योति बहन ने कहा कि ये कॉमनर के लिए नहीं है, रिच लोगों के लिए है। मुझे नहीं लगता पूरे देश ने कहा कि शायद आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 7 लाख से इनकम टैक्स को 12 लाख रिवेट करने का काम किया। ये कौन लोग थे? सैलरी पाने वाले लोग, मिडिल क्लास के लोग, ये रिच लोग हैं। अगर इनको ये दिखाई पड़ रहा है, और आज हम 2017 तक, आज हमारी सरकार का संकल्प है कि इसको हम टॉप 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी में ले जाना चाहते हैं। और आप इसका पैमाना क्या होगा?
इस फाइनेंस बिल पे जब हम खड़े हैं बोल रहे हैं तो इसका होगा कि अगर इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो उसका पैमाना पैरामीटर तो यही होगा कि आखिर आज हमारी क्या ग्रोथ रेट है, जीडीपी रेट है, और क्या चाइना की, जिस चाइना की दुहाई राहुल गांधी देते हैं, रोज चाइना मॉडल की बात करते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि आज पूरी दुनिया में इंडिया इज नॉट ओनली द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, आज इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.5% है और चाइना की केवल 4.6% है। और उसके बाद भी चाइना की बात गौरव जी अपने नेता से कहिए, थोड़ा पढ़ लें। यूनाइटेड स्टेट्स की क्या है, 2.1% है। मैं आपके माध्यम से उनको तो ज्ञान दे नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको जानकारी दे सकता हूं, और मैं आपको उपनेता है तो जानकारी दे रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स की क्या है, 2.1 है। यूनाइटेड किंगडम की 0.6% है। रसिया की क्या है, 2.6%। आज पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में आखिर हमने चाहे फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो, नहीं, आप सुन लीजिए, माननीय सदस्य, मैं जो बात कह रहा हूँ बड़ी चुनौती के साथ, मैं बड़ी चुनौती के साथ कह रहा हूँ सभापति महोदया कि आज संघीय ढांचे की बात करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ मोदी जी को, वित्त मंत्री जी को, कि आप संघीय ढांचे की बात कर रहे हैं। पहली बार इस संघीय ढांचे में हम आज जो हमारे फाइनेंस बिल पे आया है, आज इस सरकार का अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में विश्वास नहीं है, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में विश्वास कर रहे हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जब हम ज्यादा खर्च करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से एयरपोर्ट्स बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, एक्सप्रेसवेज बनते हैं, मेडिकल कॉलेज बनते हैं, एम्स बनते हैं, हमारे IIM बनते हैं। और आज उसी सरकार के कैपिटल क्रिएशन के में विश्वास करती है। और इसमें हम आंकड़े देना चाहते हैं कि आज हम कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कितना कर रहे हैं। पिछले साल की तुलना में जो देश के लिए परिसंपत्तियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो देश के विकास की आधारभूत ढांचा होगा, जो उसकी नींव होगी, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को पिछले साल की तुलना में 10.1% हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। मैं इसके लिए भी वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। राज्य की बात करते हैं, कहते हैं शशि थरूर जी ने कह दिया कि जीएसटी जे पनिशमेंट। अरे भैया, आप अच्छी अंग्रेजी बोल के देश को क्यों गुमराह कर रहे हो। जीएसटी जे पनिशमेंट आज हमने दिया है राज्यों को इस वर्ष हमने 12.5% से अधिक पैसा केवल उन राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमने 12.5% राज्यों को दिया है, जिसमें 25 लाख करोड़ राज्य की सरकारों को केंद्र सरकार ने दिया है कि आप अपने राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करिए, हाईवेज मजबूत करिए, वहां की सारी चीजों। पहली बार 1.5 लाख करोड़ हमने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है। आज तो इनको तारीफ करनी चाहिए, केसी वेणुगोपाल जी भी आ गए, किस तरीके का फाइनेंस बिल जो पूरे वर्ष का लेखा जोखा है कि आने वाले में, और सही मायने में मैं समझता हूं संघीय ढांचे को मजबूत किया। 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। बड़ी बात फिस्कल डिफिसिट की हुई, बहुत बात रेवेन्यू डिफिसिट की बात हुई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हुई, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई, कैपेक्स की बात हुई। मैं थोड़ी बात कह देना चाहता हूं कि आज फिस्कल डेफिसिट, जिस समय पूरे दुनिया में कोविड आया, उस कोविड में भारत भी प्रभावित हुआ, पूरी दुनिया प्रभावित हुई। और उस कोविड के जमाने में हमारी फिस्कल डेफिसिट, अंतर भी क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इस पे भी कोई खास चर्चा नहीं। फिस्कल डेफिसिट जो पूरे साल का एक्सपेंडिचर होता है, प्राप्तियां होती हैं, उससे अगर प्राप्तियों से, रिसीप्ट से ज्यादा खर्चा हो, फिर वो पूरे साल का एक कैलकुलेशन होता है, फिस्कल होता है। डे टू डे का हो, उसको जब हम खर्च को प्राप्तियों से ज्यादा है तो वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो जहां कोविड के दौरान 2020-21 में 9.2% इस देश का फिस्कल डेफिसिट हो गया था, प्राप्तियों से ज्यादा खर्चा हो गया था, आज 2024 में उस 9.2% फिस्कल डिफिसिट को घटा करके हमारी सरकार ने 4.5% फिस्कल डिफिसिट किया है। मैं इसके लिए भी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहा हूं। रेवेन्यू डेफिसिट, मैं सरकार, कांग्रेस यूपीए सरकार में थी, 2014 में थी, उनका 3.1% उस समय रेवेन्यू डेफिसिट था। कहते थे हमने इतना रेवेन्यू डेफिसिट, हमने फाइनेंशियल कंट्रोल किया, डिसिप्लिन किया। आज उस रेवेन्यू डेफिसिट को भी 3.1% जो कांग्रेस यूपीए की सरकार में थी, 3.1% से घटा करके 1.5% हमारी भाजपा एनडीए की सरकार ने किया। इससे क्या है कि बेटर क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग
एंड इम्प्रूव टैक्स वैलेंसी, कि हमने किस तरह से अपने खर्च का सदुपयोग करना शुरू किया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, रेवेन्यू तनख्वाहों में जाता है, इस्टेब्लिशमेंट में जाता है, जिसका कोई आउटपुट नहीं होता। हम 14 में इन्होंने 13.9 लाख करोड़ किया, आज रोजगार दिया, हमने पे स्केल बढ़ाया, आज उसको बढ़ा के 39.71 लाख करोड़ हमने इंक्रीज किया। मैं पाँच मिनट तो बोलने दीजिए, अभी 3 मिनट हुआ। और इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लीजिए, 1.9 लाख करोड़ 2014 में 1.9 लाख करोड़ था। मैं बिल्कुल कम समय लूंगा, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, केवल आंकड़े सरकार के दे रहा हूं। 1.9 लाख करोड़ इन्होंने कैपिटल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, परिसंपत्तियों करी। और आज बीजेपी एनडीए सरकार में 1.9 लाख की तुलना में 11.11 लाख, 11.11 लाख करोड़ हम आज हाईवेज पे खर्च कर रहे हैं, इंटरवाल पे कर रहे हैं। कैपेक्स है जो 0% जीडीपी, इनके जमाने में 1.7% था, आज हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री 3.4% हो गया। मैं कहना चाहता हूं, केवल कुछ पॉइंट देना चाहता हूं कि चाहे विमेन हमारी, अगर विमेन एम्पावरमेंट बात प्रधानमंत्री जी करते हैं तो विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट की बात, प्रधानमंत्री जी का सबसे ज्यादा फोकस एससी एसटी और हमारे विमेन और नॉर्थ ईस्ट पे है। इसके एम्पावरमेंट के लिए मैं केवल आपको 1 मिनट में बात कह देना चाहता हूं। ये जो बजट है, ये विकास का बजट है, और जो बजट है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसकी असली तस्वीर है। और वो आप देख लीजिए कि वेलफेयर, विमेन वेलफेयर के लिए देख लीजिए, विमेन वेलफेयर के लिए 24-25 में 3,76,529 करोड़ था। हमने पिछले साल की तुलना में महिलाओं के बजट को, सभापति महोदय मैं खत्म, महिलाओं के बजट को हमने 3,76,529 करोड़ से बढ़ा के 4,49,029, हमारी सरकार ने 19.3% पिछले साल से ज्यादा महिलाओं के लिए बजट का प्रावधान किया। और चिल्ड्रन के लिए, वेलफेयर के लिए 1,04,45 करोड़ था, आज उसको बढ़ा के 1,16,133 करोड़ किया है। 15 बस इसी मैं पढ़ दे रहा हूं 4 बात को, 15.6% हमने बढ़ाया है बच्चों के वेलफेयर के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए 1,38,363 करोड़ पिछले साल का था, हमने 21% शेड्यूल कास्ट के लिए बजट हमारी सरकार ने बढ़ाया। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा कि 1,38,000 से 1,68,478, 21.8%। शेड्यूल ट्राइब के लिए मैं कह देना चाहता हूं 1,07,874 से बढ़ा के 1,29,250, 19.8% बढ़ाया। नॉर्थ ईस्ट रीजन, मैं एक बात अपनी, मैं एक बात कह दूं, एक बजे मैं बात तो बहुत करनी थी कि। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अर्थमंत्री यांनी मांडलेल्या फायनान्स बिलावरती बोलण्याकरता मी आपल्या समोर उभी आहे। भारतात सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र म्हणून कृषी क्षेत्र आहे, मात्र केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत गंभीरतेने घेतलेले नसून दुर्लक्ष केल्यामुळे विशेषतः महाराष्ट्राच्या विदर्भातील शेतकरी हा पूर्णपणे कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येस प्रवृत्त होत आहे। सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी लागू असलेल्या अनेक योजना ह्या तोकड्या असून शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत वर्षानुवर्ष घसरण होत चाललेली आपण पाहिलेली आहे। याकरिता शालेय अभ्यासक्रमात शेती तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे, तालुकानिहाय कृषीपूरक व्यवसाय करणे, कृषीवर आधारित उद्योग सुरू करणे, सिंचनाच्या सोयी सुविधा या बारमाही उपलब्ध करून देणे, पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था करून देणे, त्यासाठी नदी जोड कार्यक्रम राबवणे, शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण मोफत करणे आणि शेतमजुरांना अर्थव्यवस्थेसाठी प्रोत्साहन देणे अत्यंत गरजेचे आहे। अध्यक्ष महोदय, शेतमजुरांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी प्रोत्साहन भत्ता लागू करणे, खते व बी बियाणे माफक दरात उपलब्ध करून देणे आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना जे पाहिजे त्या सगळ्या गोष्टी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध जर का करून दिल्या तर नक्कीच शेतकरी हा चांगल्या पद्धतीची शेती करू शकेल। माझी मागणी आहे की शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमी भाव देणं अत्यंत गरजेचं आहे। सीसीआयची कापूस खरेदी आपण पाहिलं असेल की मध्यंतरी काही काळात कापूस खरेदी बंद होती, पण ती कापूस खरेदी चालू ठेवून जोपर्यंत शेवटच्या शेतकऱ्याचा कापूस हा विकला जाणार नाही तोपर्यंत खरेदी केंद्र हे सुरू राहिले पाहिजे।
मला आवर्जून या ठिकाणी सांगायचं आहे की सगळ्यांनी आपापल्या विभागाचे बिल या ठिकाणी मांडले. महाराष्ट्रातही विधानसभेची निवडणूक भाजपाने लढवली आणि निवडणूक लढवत असताना त्यांनी आश्वासन दिलं होतं की विधानसभेत भाजपाचं सरकार जर का आलं तर नक्की आम्ही पूर्णपणे कर्जमाफी शेतकऱ्यांची करू. आज 4 महिन्याचा कार्यकाल लोटला, सगळे निवडून आले, मंत्री झाले, मंत्रिमंडळ स्थापन झालं, पण अजूनपर्यंत महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या बाबतीत दिलेलं आश्वासन या ठिकाणी पूर्ण झालेलं नाही. आपण पाहिलं असेल जलजीवन योजनेच्या बाबतीत अनेक लोकांनी स्मृती सुमने या ठिकाणी उधळली, पण मी आवर्जून या ठिकाणी सांगितलं जे भाजपवाले जलजीवन योजनेच्या बाबतीत बोलत आहे, खरंच जलजीवन योजना ही कार्यान्वित होत असताना प्रामाणिकपणे काम करताय का याचं उत्तर छाती ठोकपणे प्रत्येक बसलेल्या सदस्यांनी या ठिकाणी दिलं पाहिजे. आपण पाहताय की जलजीवन योजनेमुळे अतिशय वाईट अशी परिस्थिती ग्रामीण भागातली झाली. सगळे रोड त्या ठिकाणी तोडून टाकले, पण कुठल्याही पद्धतीच्या पाणी नळाला अजूनपर्यंत आलं नाही. फक्त हर घर नल हर घर जल ही योजना फक्त कागदोपत्री ठीक आहे, पण अजूनपर्यंत कार्यान्वित आजही ही योजना झालेली नाही. प्रधानमंत्री पीक विम्याच्या बाबतीत जर का बोलायला गेलं तर पीक विम्याचा 1ही रुपया अजून शेतकऱ्यांना मिळाला नाही आणि छाती ठोकपणे आपण सगळेजण सांगत आहे की या योजनेमुळे आपल्या सगळ्यांना लाभ मिळालेला आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की महाराष्ट्राच्या बाबतीत जर का विचार करायचा झाला तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाच्या रस्त्याची व्यवस्था ही अतिशय वाईट आहे. त्यातल्या त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते हे थोडेफार तरी बरे आहे, पण ग्रामविकासचा जर का आपण विचार केला तर ग्रामविकासच्या रस्त्याची अवस्था ही अतिशय वाईट आहे. म्हणून मी आपणास सांगू इच्छितो की जो आमदार म्हणून निवडून जातो त्याला 25-15चा असो, 50-54चा असो किंवा 30-54चा निधी हा त्या ठिकाणी मिळतो, पण खासदारांची परिस्थिती त्यापेक्षाही वाईट आहे. म्हणून खासदारांना काही ना काही निधी त्या ठिकाणी ग्रामविकास मधून तरी आपण द्यावा अशी विनंती मी आपल्याला या ठिकाणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात उन्हाळ्यात पाण्याची अवस्था देखील तशीच आहे. अत्यंत गंभीर समस्या ही पाण्याची असून पावसाळ्यात मात्र अनेक ठिकाणी पुरामुळे गावाचे तसेच शेतीचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. नदीमध्ये बारमाही पाणी राहण्यासाठी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना नदीजोड योजनेची अंमलबजावणी त्यांनी केली होती आणि तीच योजना आजही कार्यान्वित करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आजही सरकार गंभीर नाही. माझी आपणास विनंती आहे की नदीजोड योजना अभियानाअंतर्गत सर्व नद्यांना एकमेकांशी जोडल्या तर पाण्याची समस्या दूर होऊन शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात सिंचन व्यवस्था त्या ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकते. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राच्या बाबतीत आपण जर का विचार केला तर महाराष्ट्र हा मोठ्या प्रमाणात कोळसा उत्पादन करणारा राज्य म्हणून त्या ठिकाणी आहे. त्यातल्या त्यात माझी लोकसभा ही मोठ्या प्रमाणात कोळसा खनिज आणि वीज निर्मिती करणारा जिल्हा आहे. अनेक WCLच्या माइन्स त्या ठिकाणी मंजूर होत असतात. माइन्स मंजूर झाल्यानंतर आपण पाहिलं की ज्या ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी माइन्समध्ये जातात त्यांना महाराष्ट्रात आदरणीय पृथ्वीराज बाबा चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना 7 लाख ही पडीत जमिनीला, 8 लाख रुपये कोरडवाहू जमिनीला आणि 10 लाख रुपये हे सिंचित जमिनीला मोबदला मिळत होता. आजपर्यंत तो मोबदला कायम आहे. माझी आपणास विनंती आहे की पडीत जमिनीला 18 लाख रुपये, 20 लाख रुपये ही कोरडवाहू जमिनीला आणि सिंचित जमिनीला किमान 22 लाख रुपये तरी आपण त्या ठिकाणी दिले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आपण या ठिकाणी बोलत असताना मला आवर्जून या ठिकाणी आपल्याला सांगावं असं वाटते की 10 वर्षापासून आपण पाहिलं असेल की महाराष्ट्रात आणि इतरही ठिकाणी 10 वर्षापासून सामान्य लोकांचे जीवन समृद्ध बहुराज्य सरकार संस्था, मैत्रेय, सहारा व इतर संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणारे अनेक लोक आपण पाहिले. या गुंतवणूकदारामध्ये मोलमजुरी करणारे मजूर, गावखेड्यातील गरीब कुटुंब, सेवानिवृत्त कर्मचारी या सर्वांनी आपलं जीवन या ठिकाणी व्यतीत केलं. आर्थिक कमाई ज्यांची अतिशय अल्पशी अशी आहे अशा लोकांनी, सेवानिवृत्त कर्मचारी या सर्वांच्या जीवनभराची केलेली आर्थिक कमाई यात इन्व्हेस्ट केली. पण आपण पाहिलं की महागाईच्या काळामध्ये या सर्व गरीब कुटुंबाला आर्थिक अडचण भासत आहे. कमीत कमी या लोकांचा जो सहारा ज्यांनी पैसा इन्व्हेस्ट केला अशांची समस्या आपण ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ
ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 5ਵੀਂ ਤੇ बड़ी जल्दी तीजी बन जानी है। पर सभापति जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ देश के लोगों को फायदा की, क्योंकि जी पर कैपिटा इनकम है साडे देश की वो अज भी 139वें नंबर ते है। तुसीं देखो भी लोगों के हालात किदां दे है, क्योंकि अज महज 1% साडे देश के लोग है जिन्हां कोले 40% देश का जिहड़ा पैसा है, ते बाकी 99% कोले तुसीं देखो की हालात होणगे। अज भी केवल 10% वो लोग है जिहड़े 25,000 रुपए तो उपर प्रति महीना कमा रहे हैं, तो तुसीं देखो भी बाकी 90% के किदां दे हालात ने, ते जिन्हां दी कमाई भी है नहीं ते सब तो वध जिहड़ा बोझ है उन्हां ते पाया गया, क्योंकि जिहड़ी देश की कमाई है रेवन्यू है इहदे चों 66% जिहड़ा इनडायरैक्ट टैक्सेस चों आउंदा है, ते इनडायरैक्ट टैक्स कौन दिंदा है? वो जिहड़े आम लोग ने वो दिंदे है। तुसीं देखो भी अज एक 10 रुपए की बिस्कुट की डब्बी है, जिहदी तां महीने की 10 लाख की कमाई है ਉਹਨੂੰ भी उत्ते 2 रुपए टैक्स, ते जिहदी महीने की 5,000 रुपया कमाई है ਉਹਨੂੰ भी 2% टैक्स। सो सब तो वड्डा बोझ, सब तो वड्डी कमाई उन्हां लोकां तो कीती जा रही है जिन्हां दी कमाई सब तो घट है, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक ਜਿਹੜੇ ਨਿਚੜਲੇ 50% ਹੈ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ देखो भी ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ 10% ਵੀ ਉਹ ਵੀ 25,000 ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ 50% ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 64% ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਵਾਲੇ 10% ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ 3% ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ टैक्सेस है उन्होंने विच छोड़ दे के साडे देश नूं जिहड़े डायरैक्ट टैक्सेस दे जिहड़े प्रोग्रेसिव टैक्सेस है उन्होंने विच वाधा करके कमाई च जिहड़ा वाधा है वो करना चाहिए। ते इस तो इलावा जिहड़ी आम जनता की जरूरत है, क्योंकि अज इन्फ्लेशन भी वध रही है, RBI का टारगेट सी कि असीं 4% तो ज़्यादा वध नहीं देवांगे, 2 उपर भी हो सकता है 2 नीचे भी हो सकता है, पर अज इन्फ्लेशन भी 6.5% के हिसाब नाल वध रही है, जिहदा सीधा बोझ देश के जिहड़े लोकां दे पै रहे है। पर जिहड़ी असली चीज़ जिहड़े आम लोकां लई करन दी जरूरत सी ਉਹ ਸੀ ਸਿਹਤ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2.5% ਅਸੀਂ GDP ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ 2025 ਤੱਕ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ GDP ਦਾ 1.3% ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੇ हमेशा इस देश लिए बहुत बड़ा योगदान पाया। खेड के मैदान तो लैके युद्ध के मैदान तक हर जगह देश को आत्मनिर्भर करने लिए भी साडा बहुत बड़ा योगदान। पर बड़े दुख की गल है कि पंजाब नूं कदे भी ना कोई स्पैशल पैकेज ना इंडस्ट्रीयल पैकेज कदे भी कुछ दिता गया। साडे पंजाब के लोग बहुत मेहनती है, बड़े दलेर है। जिहड़े पंजाब के गवर्नर सी सुरेंद्र नाथ, उन्होंने अपनी किताब इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी दे विच लिखिया है कि जदों पंजाब दा काला दौर सी उदों भी जिहड़ी पंजाब दी जिहड़ी इंडस्ट्री सी वो बर्बाद नहीं हुई, जदों लगदा सी कलैप्स कर जू उदों भी चलदी रही ते वधदी रही। पर साडे पंजाब दी इंडस्ट्री पंजाब बर्बाद उदों होया जो साडा गवांढी सूबा हिमाचल प्रदेश ਉਹਨੂੰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਬਣਾਤਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 2003 ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ टॉप कंट्रीब्यूटर सी देश दे विच उन्हां दे विच आउंदा सी। अज असीं 2024 तक 25 तक पहुंचते सी 19वें नंबर ते चले गए। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਫॉर ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੰਡਿਆਇਆ ਗਾ, ਧੂਰੀ ਹੈ, ਦਿੜਬਾ, ਚੀਮਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ ਜ਼ੋਨ ਕਲਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਮਾਨनीय सदस्य श्री ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ
मैं हर सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਡਮ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ कह लो भी रोज की जिंदगी का सवाल है, राजस्थान तो लैके सारे मालवे का। सो मैं मंत्री जी को बेनती करूंगा कि ग्रांट जी जारी की जाए, जमीन की एक्विजिशन की जाए ताकि राजपुरे नूं जिहड़ा चंडीगढ़ नाल जिहड़ी कनैक्टिविटी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Chairperson, Madam Chairperson, for allowing me to raise one or two points in this discussion of finance bill. I think there are some hidden agendas inside this finance bill which I want to bring into the notice of Honourable Minister. For example, in this finance bill, the powers and authority of central government, you see, without prejudice, the clause 144(1), without prejudice to the provisions of the pension rules, the central government shall have the authority to establish distinction among pensioners as a general principle. Why this distinction among the pensioners? My simple question to the finance minister, why there is a distinction among the pensioners? When we see these details, it is hereby mentioning that notwithstanding anything contrary contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, and now notwithstanding anything contained in the pensioners' rules, it is hereby clarified the central government has the authority and shall always deem to have had the authority, retrospective effect, had the authority to classify its pensioners and may create or maintain distinction amongst pensioners as deemed expedient for implementing the recommendations of the Central Pay Commission under this pact. We need a clarification of the Finance Ministry. Why this provision? Why you are attacking these poor pensioners of this country? You are telling we are giving so much things for middle class. Now, this is a direct attack against the pensioners. I think you have taken the powers of the parliament for pension rules. In a way, you are trying to amend the pension rules through this finance bill. Basically, it is not a good move, madam, at all. I think you need to withdraw that clause in that provision. So, number two, today morning there was a big issue regarding the Manrega issue. You have to understand, madam, in our areas, poor workers, they are living only through this Manrega scheme. Their basically living condition is very bad, but every day they are going to the laborer's job and they are getting them some sort of minimum wages. That is why they are living. Now, last 4 months, they are not getting any single salary. Last 4 months, they are not getting any single salaries. The rule is very clear, Act is very clear. If you are delaying 15 days salary, there should be an interest of nothing. They are not getting anything, not even pension, interest, anything. This is affected to Kerala, this is affected to Tamil Nadu, this is affected to UP. All over India, I am telling the scenario. Basically, that is the point number three, I would like to mention about the cuts. You are mentioning about the very elaborately, you are mentioned about the good things about the budget. So far, how many schemes you are on the expenditure side? Total expenditure has been cut by rupees 1,04,025 crore, and capital expenditure has been cut by rupees 92,682 crores. Of this cut, the sectors that have been suffered most: health 1,255, education 11,584, social welfare 10,119 crore, agriculture 10,992 crores, rural development rupees 75,133 crores, urban development rupees 18,907, development of northeastern 1,894, and sir, this
crucial cuts were in allocation of the SC, ST, OBC and minorities. For example, PM Anishchud Jat Abhyodaya Yojana. BE 2024, rupees 2,140 crore. RE 2024 is rupees 800 crore. From 2140 to 800. Sir, PM Young Achievers Scholarship for OBC, EBC and DNTs. BE 2024, rupees 1,836 crores. 25 RE 2024 is rupees 1,381 crore. BE 25 on post-matric scholarship for SCs. BE 2024 rupees 6,360 crores. But RE 2024 is rupees 5,500 crores. Program development of ST also the same thing. There was this cut, budget cut of this major department which is affecting the scheduled caste, scheduled tribe, OBC, minority people. How you justify, madam, on this? I would like to know from you that. Then, finally, sir, I don't want to take much of your time. Yesterday, Nishkant Dubey raised so many issues against the previous government. When Union government started in 1947 onwards, that entire story is now telling for justifying this government's financial management. You came into power, that entire UPA time was very bad. Their financial management was which was very good that point of time. But you were telling yes that was very bad. Now we are coming for a new thinking. Sabka saath, sabka vikas. Sabka saath, sabka vinash happening in this country, sir. That is what happening in this country, sir. Sir, I'm telling my point, sir. I'm telling my point, sir. Therefore, संसद के अंदर बोलते समय sir, this is sir, speaker, sir. आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आगे का शब्द ठीक नहीं है. Last time also, sir, I requested you, sir, at least feel us also. This house is also belongs to us. At least, whenever Rishikant Dubey is racing, you allowing everything. You giving mic. Whenever we people are racing, no mic at all. No mic at all. There is no scope. LOP is racing. LOP didn't have any chance to speak. How can Parliament run like this? How can Parliament? How can, sir? You are very generous to the members individually. But I think. एक मिनट माननीय सदस्य, मैं आपको बार बार आग्रह करता रहता हूं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कभी चेयर पर प्रश्न मत उठाया करें, ये मेरा आपसे आग्रह है. और मैंने जो शब्द बोले उसके बाद जो शब्द बोले वो आपकी पार्टी के लिए भी नहीं, अगर आप समझते उचित है तो ठीक है. Sir, I agree, sir. This is not your fault, sir. Government is, I'm talking about the government attitude, sir. Government don't want us to make news. When Parliamentary Affairs Minister is racing, every time he used to attack us. Yesterday, Kannada thing happened. What was the real issue? Their reservation for OBC is there. Their reservation ambit of OBC has been increased. SC has been increased. ST has been increased. Nobody is not telling. One misleading statement. Jikesh Kumar clarified that. I didn't told like that. He given a legal notice also already. You taken up that issue and one day completely you want to wash out. We are not. Our ruling party wanted to adjourn the house. We are ready to cooperate with you, sir. Today also we are cooperating with the finance minister's bill. We are also cooperating. Whenever you ask us to cooperate, we are cooperating. But at least allow us also to tell about this government's anti-people activities. So my request to Honorable Finance Minister, he is an experienced finance minister. I ask him why this pensioners is going to be in your target list now. How is it? Whether the minister is going to retain this provision in the bill or thinking about the pain and hue and cry of the pensioners, are you going to withdraw that provision? With these words, I am concluding. माननीय सदस्यगणों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 2 बजे माननीय वित्त मंत्री जी जवाब देंगे. और कभी भी, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि चेयर पर प्रश्न मत करें. ये विशेष ध्यान रखें
श्री सुश्री इकरा चौधरी 2-2 मिनट में अपनी बात कह दें। माननीय धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज मैं 2025 के वित्त विधेयक पर अपने विचार रखने के लिए खड़ी हूँ। सरकार इस बजट को जन कल्याणकारी बता रही है, लेकिन क्या ये वास्तव में गरीबों, किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करता है? क्या ये युवाओं को रोजगार देगा? क्या महंगाई में राहत देगा? लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की जीडीपी पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है और हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 27 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के ओर अग्रसर है। लेकिन यह उपलब्धि तब फीकी पड़ जाती है जब हम प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़ों को देखते हैं, जिसमें भारत विश्व स्तर पर 100 से अधिक देशों से पीछे है। 23-24 के लिए स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल 1,24,600 रुपए है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सरकार इस डेटा पर बात करने से बचती है, क्योंकि वे ये नहीं समझा सकते कि पूरे देश की जीवन स्तर में वृद्धि क्यों नहीं हो रही। वे ये नहीं बता सकते कि देश में इतनी गहरी आय असमानता क्यों बनी हुई है और आम नागरिकों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में इतनी कठिनाइयां क्यों होती हैं। सरकार दावे करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस विकास का लाभ केवल अमीरों को मिल रहा है। आज हमारे देश में शिक्षित युवा नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहा है। सरकारी नौकरियों में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही। निजी क्षेत्र में भी नौकरियों की संख्या घटती जा रही है। उधर देश की शीर्ष 1% अमीरों के पास 40% से अधिक संपत्ति है, जबकि करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है क्योंकि सरकार की नीतियां बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है, जबकि गरीबों और मध्यम वर्ग को महंगाई और टैक्स के बोझ तले दाबा जा रहा है। जब यह सरकार सत्ता में आई थी तब $1 लगभग 60 रुपए के बराबर था और आज 83 तक पहुंच गया है। सर 2 मिनट। रुपए की इस गिरावट का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। इस सरकार की मौजूदा वित्तीय नीतियां पूरी तरीके से अमीरों के पक्ष में झुकी हुई है। भारत एक समाजवादी देश है जहां सरकार का कर्तव्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ अपने नागरिकों को पहुंचाए और उन्हें समान अवसर और सुरक्षा दे। भारत के सरकारी स्कूलों और अस्पताल की हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। सर बस किसानों पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। हमारा देश तब तक सशक्त नहीं हो सकता जब तक हमारे किसानों को उनका हक नहीं मिलता। 2023-24 में भारत की 46% श्रमिक आबादी कृषि क्षेत्र में कार्यरत थी, फिर भी इस क्षेत्र को नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार किसानों की आय दुगनी करने का वादा करती है, लेकिन असलियत यह है कि खेती की लागत बढ़ रही है, जबकि किसानों की आमदनी स्थिर बनी हुई है। ट्रैक्टर और हार्वेस्टिंग मशीनों पर 12% जीएसटी में, सर 1 मिनट, सर किसानों का मुद्दा है, बस 1 मिनट सर, खत्म कर लें। हार्वेस्टिंग मशीनों पर 12% जीएसटी से किसानों को परेशानी और बढ़ रही है। यदि सरकार इस बोझ को कम कर दे तो खेती में फायदा होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो मिलने वाली राशि है उसको बढ़ाकर 6,000 से 12,000 कर दे तो किसानों की आय में फायदा होगा। सर, can I start, sir? Sir, while we discuss this finance bill 2025, pardon, sir? 2 minutes. Aye, sir, 2 minutes. Not even 2 minutes. Sir, I would like to invite the attention of the Honorable Finance Minister regarding 2 issues, sir, 2 anomalies in the GST Act. Sir, an amendment was brought in by insertion of Section 7(1)AA of GST Act 2017 in the Finance Act 2021 by giving effect from 1/7/2021, inserting an explanation deeming a club or association as its members to be 2 separate persons. So the taxable event was enlarged to include activities or transactions between a club or association and its members. Sir, it appears that the amendment was made to overcome the judgment of Supreme Court of India in State of West Bengal versus Calcutta Club. So this has caused a heavy and unforeseen burden on the cooperative societies in as much as the cooperative societies is to collect tax from its members. I would request the Honorable Finance Minister to urgently review this issue and, help our cooperative societies to, help its members not to collect tax from the cooperative society members. So second thing is, sir,
is this traditional snack industry are forced to charge GST at the rate of 18%. So varying rates for different products for MSME food business has been, slapped. Advanced ruling system is the mechanism by which we can correct all this. But the advanced ruling system is dysfunctional, totally dysfunctional in the state of Kerala. So 18% GST is levied on traditional snacks like Palampuri, Vada, Ada, and Kozhikode, etc. Sir, these items are produced by micro units, Kudumbasri units, and sold through bakeries. The shelf life is less than 24 hours. Sir, the problem is that they don't get input tax claims also. And no specific HSN codes, and so high tax rate is being levied on these items. The finance minister has gone to consult with the officers, so she is not listening to it. I am sorry. Anyway, sir, I would like the finance minister to give particular attention to these two, GST problems. Sir, finally, sir, just 1 second, sir. Finally, sir, I have requested for a jackfruit board to be established by the government. Sir, jackfruit is known as the the doctor of all fruits, used in Unani and Ayurveda system of medicine. I am concluding, sir. It is a super food. No. Sir, the Cleveland University. Sir, please. What is this, sir? You are being very unfair. No, 2 minutes बोल दें. Sir, just give me 1 second, sir. 1 second, sir. Let me 1 second में खत्म करो. हाँ करिए 1 second में खत्म. हाँ चालू है. आप बोलो. Sir, the Cleveland University, in its comprehensive review, says that this is rich in proteins, vitamins, and minerals. Am I being recorded, sir? No. Sir, plant-based chemicals are there. Potassium is there. Magnesium is there. Phosphorus is there. Sir, the Duke University says that it is nutritionally superior to apples and mangoes. So I would request, Honorable Finance Minister, please, I would request the establishment of a jackfruit board. This will do good for the country. शफी परमीर बोलना शुरू किए. Sir, thank you for the 5 minutes that you are giving me. 2 minutes का 5 minutes का 2 minutes. Sir, 5 minutes, sir, please. आप बोल रहे तो ये भी खत्म हो जाएगा. Sir, we can't see fiscal prudence in this bill or the budget presented by the government. But what we can see is daylight robbery, sir. Sir, I have no time left to explain everything. But just take one example, sir. We have heard so many members from the ruling party mentioning Pandit Jawaharlal Nehru ji, Indira Gandhi ji, and Rajiv Gandhi ji and Dr. Manmohan Singh enormous number of occasions. They keep on criticizing them. Sir, why can't they recall the then Gujarat Chief Minister's statement on massive hike on petrol prices? In 2012, 23rd May, the then Gujarat Chief Minister, now our Prime Minister, tweeted, massive hike in petrol prices is a prime example of the failure of Congress-led UPA. If it was a failure then, what it is now, sir? Under UPA from 2004 to 2014, the excise duty collection was 5.6 lakh crores, an average of 56,000 crores a year. But under this regime, from 2014 to 2024, 23 lakh crore is being looted from the common man of this country, sir. An average of 2.3 lakh crores a year. So what is this, sir? This is not a failure? This is not daylight robbery? What can we call this, sir? So this government is heartless. Governance is heartless. I saw a news yesterday from UP Ambedkar Nagar. A 7-year-old small kid, sir, running away with her books from a house that has been demolished by the bulldozer Raj of the Yogi Adityanath government. They claim for double-engine government. But, sir, there is no engine and no brain and no heart left with this party, with the ruling party, sir. Sir, I must say, it continues in Manipur also. Sir, A for Austria, B for Bhutan, Brazil and Brunei, D for Denmark, E for Egypt, F for France, G for Germany, Greece, Guyana, I for Indonesia, Italy, J for Japan, K for Kuwait, L for Laos, N for Nepal, Nigeria, P for Papua New Guinea, Poland, Q for Qatar, R for Russia, S for Singapore, South Africa. Sir, U for Ukraine, United Arab Emirates twice,
United Kingdom, Uzbekistan, and United States of America multiple times. Our Prime Minister went for 38 trips abroad, and no one moment in Manipur he didn't visit, sir. He didn't find time to visit Manipur. M4 Mauritius was there, but he couldn't. To Minister, one second. No, 1 second. आप वित्त विधेयक पे बोल रहे हैं? नो, मैंने बोल दिया माननीय वित्त मंत्री जी. Sir, thank you very much, sir. Allowing me to. No, sir. He's called me. माननीय वित्त मंत्री जी. Thank you, sir. Thank you very much for allowing me to respond to the honourable members who spoke on the finance bill. माननीय सदस्य वित्त मंत्री जी इजाजत नहीं दे सकती, इजाजत मैं नहीं दे सकता हूं यहाँ पे. चलिए माननीय वित्त मंत्री जी. He's allowed me. He's called me. Okay, sir. Thank you very much, Speaker, sir, for allowing me to respond to the discussions which have taken place on the finance bill. This finance bill, sir, we have attempted to do several things which, as per the expectation and aspiration of the people of India, and also the goal that the Honorable Prime Minister has given us towards a Vikasit Bharat by 2047, which is hardly 22 years from now. So, we have done a lot of major steps through this finance bill. It's actually a bill which aims to provide tax certainty. It rationalizes a lot of provisions which are towards ease of doing business and also provides unprecedented tax relief in honor of the taxpayers of this country. So, I'll straight go to talking about the direct taxation, in which the income tax is something which I'll spend a minute on, and then talk about the other direct tax reforms that we've undertaken. We've recognized the strength, spirit, and the contribution of the Indian middle class, and as a result, this budget has, under the new tax regime, come with a proposal that there will be now zero income tax payable for income up to 12 lakh rupees. So, that is an average of 1 lakh rupee per month salary, which is going to be tax-free, completely tax-free. So, for the salaried taxpayers, sir, this limit technically will be even higher. At 12.75 lakhs, which is inclusive of the 75,000 rupees standard deduction, and the marginal relief that is going to be applied for the taxpayers reduces the tax burden on the marginal rise in the income beyond the limit. So I will elaborate this point in response to some of the members who have asked specific question about what happens for those who are crossing 12 lakhs per annum income. I'm also glad to say that through this finance bill, we have brought in the new income tax bill, meaning I have not presented it as part of the finance bill. The introduction of the new finance bill during the budget session this time, which of course is rightly gone into a select committee's review, post which we will take it up in hopefully in the monsoon session, aims to. Yes, I thought I said that. I said it is not brought through the finance bill, it is a new income tax bill. Thank you. So, brought during this budget session, but hopefully we'll have it taken up for discussion in this House during the monsoon session. So, during this budget session, sir, not only the provisions and also certain reformatory steps taken during the through the finance bill, the rationalization of customs also is a major thing that I'll come to talk about in a minute. So,
The steps taken for the customs duty reduction are also post elaborate discussion with the stakeholders. So there has been an element of Jan Bhagidari, both in the preparation of the new income tax bill and in the larger finance bill itself. The other direct tax reforms, sir, are worth mentioning. We have brought down certain TDS and TCS provisions. We've increased the thresholds so that the deduction of tax starts at a higher threshold rather than a lower. In respect of sale of goods, the requirement of TCS, particularly under the section 206C 1H, is proposed to be done away with. We are completely removing it. Further, considering the difficulties which is faced by the taxpayer, we now propose to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. And that is a major step which will benefit the middle class, because in order to prove that the second house is also under their occupation, they do quite a few of paperwork and diligence has to be kept up. We are now saying you don't even need to do the paperwork. We take it as you stated for the second such occupied property. In order to streamline the process of transfer pricing, sir, and to provide an alternative to yearly examination, we have proposed that a scheme of determining arm's length price in international transaction for a block period of 3 years at a time. So this will be in line with the global best practices. So annually, people do not have to rush to prove what the transfer pricing commitments will be. Further, we've also, with a view to reducing the litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules have been expanded. Instead of having it narrow and expecting people to continuously come and prove that it is required for their business, we've widened it, and the safe harbor rules are therefore broader in favor of the assessee. Further, the presumptive taxation regime for non-residents is also now a lot more relaxed, particularly in the case of those businesses or resident companies which are operating in electronics manufacturing facilities, because electronics manufacturing demands supply of components in time, and those specific components will have to be brought in. If time lapses in their supply from the original equipment manufacturer, the production itself will suffer. So we've given them this particular presumptive tax regime, so that the non-residents who participate in these services, particularly given to a resident company, can benefit. So also for the startups, again, which is primarily for the middle class, government has proposed to extend the period of incorporation of startups by 5 years to allow the benefit available to the startups which are incorporated before 1/4/2030. So that's been an extension given so that there's greater participation of the newer registering startups as well. Again, to promote IFSC, the International Financial Services Center, government has proposed specific benefits to ship leasing units, to insurance offices, treasury centers of global companies which set up business in the IFSC. In order that they can claim benefits, the cutoff date of commencement for the commencement in IFSC has also been extended for 5 years, that is up to 31/3/2030. So these are, in brief, the steps through this finance bill taken up for direct taxation. Now, if I were to briefly look at the indirect tax, sir, as I said earlier, the customs rationalization, tariff rationalization, which was an exercise that we began 2 years ago, every year some or the other rationalization related steps have been announced in the budget. Now, this budget, this finance bill in 2025
relating to the customs aims to rationalize tariff structure and to address duty inversion. These will also support manufacturing units, domestic value addition, promote exports, facilitate trade, and also provide relief to the common people. So that has to be highlighted because it's not just the new income tax bill which is coming, but this finance bill itself is talking about rationalization of customs, which is a very big step forward so that importers can benefit from it. Exporting industry which import parts can also become cost competitive. So, Budget 2025, sir, we aim to boost domestic production and enhance export competitiveness by reducing duties on raw materials and inputs, making domestic products more cost effective, as I said a minute ago. So, taking forward the comprehensive review of customs, about which I would like to elaborate, the rate structure announced in July 2024 budget, we are taking that forward. So as I said, the exercise began 2 years ago. We made a major announcement in July 2024 budget. We are taking it further in this budget also. So this finance bill actually proposes to remove 7 customs tariff rates for industrial goods. The 2 tranches of rationalization of customs tariff carried out so far have reduced the number of tariff rates from 21 to 8, including the zero-rated goods. Many Indian exporters have become cost competitive. And one matter which will interest honorable members is when you're looking at cess and surcharge, we made sure that on no one item on the customs duty where it is being imposed, both cess and surcharge would be imposed. We are looking at that, and therefore in this budget, in the finance bill, we have proposed that only one can be applied, and therefore only one cess or surcharge will be applied on any one item. So, for instance, social welfare surcharge will be now exempted from 82 tariff lines which are subject to a cess. So the double burden of both cess and surcharge on any particular item is being removed. In addition, sir, we also propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing to the list of exempted capital goods to boost domestic manufacturing. So this will actually have a bearing. So EV battery manufacturing will be a lot more cost competitive because 13 additional capital goods are being exempted. So 28 additional capital goods for the mobile phone battery manufacturing are also being exempted. Sir, we also propose in this finance bill to fully exempt basic customs duty on cobalt powder, waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. So, this is in addition to the 25 critical minerals which were fully exempted from the basic custom duty in the July 2024 budget. So we have not wasted time. After that, we've rapidly also brought in more goods, particularly critical minerals, into this exemption due. So the Customs Act as 1962 does not provide, as it prevails now, does not provide any time limit to finalize provisional assessments leading to uncertainty and cost to trade. So as a measure of promoting ease of doing business, in this finance bill, government has proposed to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. That will itself bring in a lot of certainty for those importers and exporters. Sir, we also propose to extend the time limit for end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. What this actually means is some exporters, in order that they produce goods for export, import some components. The customs duty is not paid because they're bringing it
for the production of goods which have to be exported, because we don't export taxes. But for that use of that component which is imported, we normally give 6 months, saying you brought it in June 2025, by December 2025, you should have sent that product out, that product which you manufactured with this particular item imported. Many exporters found it difficult. The 6 months period is not sufficient. So for them, we have extended that time period to 1 year. So this is more an export-friendly measure that we have taken. So we have actually allowed the industry to better plan their imports, and also we are providing operational flexibility. So these are as about the finance bill as it was presented to the House. We are, of course, coming up with some government amendments. The amendments which are being brought, 4 of them I'd like to highlight. The simplified safe harbor regime in Section 9A for investment funds managed by fund managers in India. Normally, these fund managers are expected to verify that no one exceeds the 5% limit in terms of direct investment or indirect investments. So it is proposed to be made further simpler by removing this 5% condition for monitoring indirect investment, because it becomes too cumbersome for them to search for who the investor is indirectly, and that itself hampers investment, so we are removing that. Clarificatory amendments in the provisions for IFSC's provisions and presumptive taxation for service providers for electronic manufacturing units is also being brought in as government amendment. And the third one, for clarity and consistency, a government amendment is coming in for small changes in the block assessment provisions, and then the 6% equalization levy, which was being proposed, which was in effect for advertisement and other things, is being proposed to be removed, so that we can address the uncertainty in the international economic conditions. So largely, these are the major... yes, I'll answer. These are my opening statements. I'll come to answering each one of the members' points. I will come to answering. So these are the finance bill related. So then I now come to addressing individual members who have raised issues or sought clarification. So I'll go one by one. By the issue, 2 or 3 members could have spoken on each of the issue. I'll go by the issues. So on the income tax, as I said, members have shown concern for incremental increase over 12 lakhs. What if, I think this was a member, Sri Neeraj Maurya, who had raised this question about if income is 12.10 or 12.20 lakhs, tax will have to be paid. So ensure taxes are graded from 12 lakh rupees is what the suggestion came from Sri Neeraj Maurya. So I want to say that even while I read the budget speech, we made it very clear that marginal relief is being granted. Under the provision of Section 87A, it has been ensured that the tax payable by a person having income marginally above 12 lakhs is required to pay only the marginal amount of tax equal to the amount of income above 12 lakh, so that his carry home is also 12 lakh of rupees. So he may earn incrementally more, but he'll still take back to his home 12 lakhs, and that increment on the incremental amount, the calculation is also very well explained. For instance, with an income of 12.10 lakh, rupees 10,000 is what he earns over the 12 lakh that he already earns. So for that 10,000 rupees, it will be paid as income tax only. Tax without marginal relief on that person earning 12.10 lakh would have been 61,500. So we have given the marginal relief where he, for the 10,000 rupees he earns more than the 12 lakh, the 12 lakh is exempt from tax, but the 10,000 will have to be paid as tax.
he would have ended up paying 61,500, whereas because of the marginal scheme that we've added into this scheme of income tax, he ends up paying only 10,000 rupees. So, and when income of rupees 12.20, only 20,000 will be paid, and he will still take the 12 lakh. Otherwise, the marginal relief, if not given, he would end up paying 63,500 rupees. So the marginal relief has been brought in for the incremental increase in pay. Sir, personal income tax has been reduced by way of rebate. This can be altered in the coming years. It may be done away with in the future years if income tax collection is lower. Was one of the questions asked by an honorable member here. Sir, I can only say, if you look at the track record, even during COVID, we did not raise tax. So where we have come up with a rebate in order to benefit the middle class, an element of suspicion is being brought in, saying, what if tomorrow you... I'm sorry, sir. Sorry? 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 On petroleum products? Excuse me, sir. I will answer what I've heard till now, but if members want to ask these questions, I will also point out to them. Citizens are our citizens. I have not raised any rates on any item, nor did I increase income tax. But if fuel is being brought to discussion, and that too by honorable member from Tamil Nadu, I will say their manifesto promised. They have not fulfilled their promise, and he is asking me question. Amazing. So, sir, N.K. Premachandran ji has said collections in personal income tax have shown considerable buoyancy in the last few years. His question was, how are you showing income tax collection growth while giving 1 lakh crore revenue foregone? I want to let the honorable member know, N.K. Premachandran ji, the calculations are not done without taking these 1 lakh foregone, income tax reduction. We've spent a lot of time, and most often, in fact, I would want you to please look at the last 5-6 years of the budgets. I've been accused of underestimating, never overestimating, but I've replied each time saying our calculations are realistic. And that is what I will use to explain in answering your question. Collections in personal income tax have shown considerable buoyancy, sir, in the last few years. They have been increasing around 20% year on year. For the year 25-26, the personal income tax projection is 13.6 lakh crores. The RE for 24-25, I'm talking of the projected, which is BE for 25-26, is 13.6 lakh crores. The RE of the year that we are completing, which is completing on 31st March now, is 12.2 lakh crores. So 12.2 lakh and going to a BE of 13.6 is done with a certain realistic calculation. The projection, sir, of growth for 25-26 is around 13.14%. The effective dip of around 7% in personal income tax growth is on account of the factoring in of the revenue foregone, which is 1 lakh. So the dip is already shown for the 1 lakh crore which is being foregone. So the calculation is after showing the dip. And that is why it is a realistic number. So the projected collections for income tax for 25-26 are based on sound data. Sir, income tax receipts So the growth rate question which Shri N.K. Premachandran ji raised, I think I have sort of answered it.
I'll now move to the privacy issues, which people have raised. Privacy issues, which is not so much the finance bill related matter. It is a matter which is being taken up from the new income tax bill, which is with the select committee. But I want to assure the honorable member that a provision, particularly to look at the data, exists in the current environment, particularly in certain cases of search and seizure authorized by the competent authority, where access code is not available and the person concerned is not cooperating with the proceedings, the authorized officer may gain access to such computer system, exists even now. Now it is now being specifically brought in and mentioned in the new bill because what is mentioned in the 1961 Income Tax Act is books of account physically kept, and then the ledgers, and every manual record which will show about your income, your expenditure, your monies and all that is specifically mentioned. And since the 1961 Act does not mention the digital, most often it becomes contentious. People go to the court or question, all right, I've shown you my ledger, but why do you want my passcode so you will see my digital? Becomes an issue. So in order that what prevails now with a gap, that gap is getting filled up in the new income tax, which is before the bill, which is before the select committee. So in this, I will take a minute to explain as to why that digital thing will have to be brought in. Sir, encrypted messages and mobile phones, unaccounted money to the extent of 250 crores have been detected when the encryption has been decoded. One. Second, evidences which have been seized from WhatsApp messages, particularly crypto assets worth more than 90 crores, and the network of people involved in it have all come out of WhatsApp messages. Now, if the law does not give you the legal backing, in spite of the fact and evidence being in your face, you will have to go stand in the court to say, yes, but the law doesn't provide, but the evidence is here, the money is being misused, it is unaccounted money. It becomes tedious. And therefore, the digital element has to be brought in. I'll bring in one more example, sir. WhatsApp communications and incriminating materials found from such conversations helped to unearth the syndicate and identify the end beneficiaries of bogus bills worth 200 crores. So do I go to the court again saying, but the law doesn't allow me to look at WhatsApp messages? So we need to bring in. There's also another example, sir. Capital gains of 150 crore on sale of land was reduced to 2 crores by creating false documents of land cost of acquisition, and also using all payments in banks statements as claims of investments and improved expenditure. So the WhatsApp group of key persons include many professionals also, unfortunately. So we had to contemplate on how to be lawfully on the side of law to say that these are evidences which are incriminating in themselves. Therefore, it has been brought in. I can also give one more, which is evidences have been found with the help of Google Map History. So in the case of Google Map History, sir, found on the phone was used to determine the frequented locations of individuals who enabled location history. This enabled detection of hideouts where cash and unaccounted transactions are kept, and that also came of help. So there is a need for us to change or add the digital elements into the Act itself. So one last example for that, sir. The prohibition of Binami properties, Instagram accounts was used to establish the beneficial ownership
of vehicles, expensive vehicles, no ownership details, track it at the going backward and forward. We could break the case by using Instagram. So benefit of technology for the sake of country's exchequer. So then questions about pending appeal cases, that CBDT has poor dispute management and pursues all cases. Sir, I would like to say, sir, in order to reduce the number of pending appeals, several measures have been taken by the CBDT. One such a thing is the enhancement of monetary limits for filing of appeals by the department before the Income Tax Appellate Tribunal, High Court or the Supreme Court. Creation of new posts of joint commissioners for appeals exclusively. Also, we came up with the direct tax Vivad Se Vishwas scheme in 2020 and also in 2024. Twice we brought this, and this has helped in reducing the pending appeals. And the famous, or not so famous, repetitive appeal. A new section 158AB is inserted so as to provide that if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law pending in appeal before the jurisdictional High Court or the Supreme Court, or in any case, the filing of further appeal to the appellate tribunal or the jurisdictional High Court in the case of assessee shall be deferred till such a question of law is decided by that relevant court. So that's been a major step in holding the department back, the CBDT back, from going into a case which is already, a similar such case is already in a court. We don't want to pursue it. We'll wait for the final verdict to come from there. So also there was this question by Mohammed Bashir ji, dispute resolution mechanism of department is very poor. So I want to inform the member that the dispute resolution mechanism following the measures that we've taken, provided we've brought in a provision of updated returns, and that's been introduced for voluntary compliance. Sir, I'm sure the honorable members will be aware that we had already enabled updated additional updated returns so that assessees can correct the not declared income when they want to modify their assessments. For within the first year, if you modify and come up, we only say pay 25% additionally. And if the second year they come up, we say pay 50%. And these two, first year and second year modified amendments, provisions have actually been well received by the assessees. So we are encouraged to bring in the third year and the fourth year modified assessment provision for the benefit of the tax assessees, that when they came in the first year, they paid only 25%, second year they paid only 50%, third year they will be now given the option to choose, and they can just pay 60% and close the whole business, or the fourth year, if they want to modify, they pay 70%, and that is where the story would end. So the Dispute Resolution Committee has also been constituted. A taxpayer having taxable income of up to 50 lakh and disputed income of up to 10 lakh shall be eligible to approach the committee for relief, and therefore that element of uncertainty is being removed. E-verification system is also being brought in to increase voluntary tax compliance. E-verification system 2021 was notified in December 2021. I just wanted to highlight that, sir. We carried out a nudge campaign, sir. I'd like to inform the honorable members about it. This is in relation to assets and monies kept abroad. I'm sure the honorable members, many of them would recall that in 2018, my eminent predecessor, Sri Arun Jaitley, had made an announcement in the House that there is an agreement globally now to share information. India will be receiving a bulk of information of Indian accounts being held outside,
And every year we shall use that, and where prosecution has to be, or where cases will have to be filed in the court, because not everybody's name and account number which comes in are of people who are holding tax evaded money. They can be genuine accounts also, because the stock that they send, the bulk, the data dump that they give us, has everybody's account in it. So using that, we have really been nudging taxpayers, saying we've got this information about your property abroad, about your deposits abroad. Would you want to look at it and come back to us? That has actually helped us, and I'd like to highlight how. We nudge the taxpayers to voluntarily disclose their foreign income and assets. SMSs and emails were sent to around 19,501 select taxpayers, asking them to review their income tax returns filed for the year 24-25 based on the information available on the income tax about their foreign deposits. The result of that campaign, I'm happy to share with the honorable members, out of 19,501 taxpayers, a total of 11,162 taxpayers revised their returns and filled scheduled foreign assets form and declared an total assets of 11,259.29 crores, disclosing foreign income of also 154.42 crores. So the nudge campaign about properties abroad which have never been disclosed have been, because of the campaign, successfully at the ease of the tax assessee been declared, and also the monies due have been paid. In addition to this above, 883 taxpayers reviewed their IT returns and corrected their status from resident to non-resident. Even that correction happened because we were able to give them the facts and ask them to either accept or give us a reply about it. So in their revised return for the year 24-25, they have said, no, they are not residents, but they should actually be treated as non-residents. So due to this outreach, there was a ripple effect, sir. This resulted in an addition of 13,516 taxpayers declaring foreign assets worth 7,564 crores and foreign income of 353 crores, or approximately, that is, in their revised return for 24-25. So cumulatively, this simple nudge has resulted in declaration of foreign assets worth 29,208 crores and foreign income up to 1,089 crores in the Schedule FA by 30,161 taxpayers. So this attempt by the Government of India to make sure people who have not declared their assets can now declare it by us taking a proactive nudge-based approach. So I'm very happy that this step is being responded well by the assessees as well. Sir, I've already probably said enough on the TDS, but I just want to say one line. So the two pillars of TDS-related problems are non-filers and the search for the valid PAN number. So this finance bill, we have proposed to omit the section 206AB and section 206 CCA, under which higher rates of TDS and TCS were levied in cases where the deductee or collectee were non-filers. Most often, non-filers were the ones on whom action had to be taken because they collected the TDS but did not deposit with the government's account, or they did not show because PAN and Aadhaar card linkages were not available with them. So we have very clearly said, in order to reduce the compliance burden
particularly for very senior citizens, certain non-residents, etc., we have clearly kept on the PAN and Aadhaar, we have kept the non-residents and also senior citizens out, and this provision has also been brought under the omission category. So there was this question by several members, Vishal Dada Patil, Shri Vishnu Prasad, and also Shri Mohammad Bashir, as to why the two tax regimes should continue to run parallel. I just want to say, sir, it is a stated policy of the government to phase out exemptions, deductions, and other incentives, while at the same time gradually reduce the tax rates. And we have provided as an option rather than a forceful decision to say we are shutting down the open. We are not. We are running both in parallel so that people who benefit from the old regime can please continue to be so. I am not drawing them to the new regime till such a time they either have exhausted all the exemptions or they choose to come here because of the rates. So that is why both the regimes continue. Sir, Shri N.K. Premchandran ji spoke about why did you have to reduce the corporate tax? It is only benefiting the large corporates. That's not true, sir. It benefits many companies which are medium-sized and middle as well. But has it benefited India? Yes, it has. According to the World Investment Report 2023, India was the third largest recipient of greenfield investment projects globally, with about 1,008 greenfield projects announced. Additionally, the number of international project finance deals in India rose by 64%, making India the second largest recipient of such deals. So investments come, they create more jobs, entrepreneurial opportunities are available for middle class. All this has been made available because of the corporate tax reduction. Sir, I want to just highlight the fact that, on GST-related issues, sir, several members spoke about issues related to GST. I just want to highlight, sir, that the allegation that the GST is not progressive is absolutely unfounded. It is not true at all. I would like to highlight how, sir. Wealthiest 20% of Indians contribute 41.4% household GST and 14% of the total GST. That is, wealthiest 20% of Indians contribute 41.4% of household GST and 14.2% of the total GST, while the bottom 50% contributes just 28% of household GST and 9.6% of the total GST. So this argument that it is not progressive is not right at all. The poorest 50% face an average effective GST rate of 7.3% only. Under the pre-GST regime, sir, the average indirect tax rate was around 15%, whereas as of March 2023, after the GST has been introduced, the average GST rate is just 12.2%. At the time of introduction, it was 15. In pre-GST, it was 15. Now it is only 12.2. Sir, I've repeatedly said several times that the taxes on ordinary people's daily use products are far lower. It have been brought down. I'm not going to take this August House's time by reading the list completely. I will probably put it on the table for any member to look at. NIPFP, a big research center, shows that the most consumer items face low or no GST taxes at all. Less than 3% of common consumption items attract the highest rate of 28%. So 28% tax is on only less than 3% of common man consumption items. Nearly 60% of consumption items face 5% or lower GST. So GST is exempted on several items, and I would like to broadly categorize them: unbranded food items, certain life-saving drugs, healthcare, education, public transport,
sanitary napkins, hearing aid parts, agricultural services, etc. are completely exempt. Sir, several members seem to have said no discussion on reducing GST and reduce the number of slabs in this parliament. So the GST Council is a constitutional body. That's where the discussion happens. And subsequent to the decision taken by a group of ministers, and in that group of ministers, finance ministers of Bihar, UP, Rajasthan, West Bengal, Karnataka, and Kerala are all members of the committee. They are deciding on how to reduce GST and also reduce the number of slabs. Post that, if there are any amendments to be made in the CGST, we will come here. So the discussion on the reduction can be a part of the general discussion, but the actual discussion and the decision happens at the GST Council. So, sorry? Yes? Yes? Yeah, HSN code is something which the council will have to work with the authorities who decide on the codes. Sir, 5% GST is imposed on muscular atrophy drugs, where the cost of the drug is 80 lakhs for 1 year. This was Srimati Sangeeta Roy from AITC. I just want to highlight, sir, that the IGST on import of drugs for rare diseases, including muscular dystrophy, has been fully exempted when imported by the patients for personal use. So there cannot be a GST on it. So I just want the member to please hear this. Once again, I'll repeat that the import of drugs, the IGST on such imports, for rare diseases, including muscular dystrophy, has been completely exempted for patients for their personal use. Second, they are also exempted for person or institution which are recommended under the listed centers of excellence for their research or for any other testing. So they are all exempt, sir. So they were questioned. Hebe Aiden had raised this question about how Lord Ayyappa's prasadam has been put under GST. And also talking about food prepared, like rice dumplings, are also under GST. I just want to say, sir, prasadams supplied by religious places, like temples, mosques, churches, gurudwaras, dargahs, are completely exempt from GST. I want the honorable members to kindly take note of this. They're completely exempt from GST. Sir, as regards reducing the rates on items in which the tax is being levied, as I said, there is a GOM which is looking into it, particularly for the food sector related queries. The GOM will take a call. So then, 18% GST on prosthetics is insensitive. Reduced GST on prosthetics and life-saving equipment was observed by one of the members. I just want to say, sir, from 2017 to 2022, as it was before, the prosthetics attracted 12% GST till 22. Then in the 47th GST Council, held in June 2022, the GST rate was reduced to 5%. Life-saving medical equipments, most medical devices, such as X-ray apparatus, alpha, beta, gamma radiations for medical surgery or veterinary purposes, attract concessional GST rate of 12%. Artificial parts of the body attract 5% only as GST. So I just want to be clear that GST is not levied on certain critical life-saving equipments. So there was this question about Suksham Sinchai, the micro irrigation. Devesh Shakya, member, asked this question.
The GST rate on drip irrigation systems, including lateral, sprinklers and products, has been reduced from 18% to 12% as per the decision taken by the 25th GST Council meeting on 18 January 2018. On the GST cess, there was a DMK member, Malayarasan, sorry, the spelling is wrong here. Malayarasan ji had asked this question on GST compensation, sir. I think I've answered this question several times. GST compensation, first of all, let me make it clear. There is no due whatsoever to states on GST compensation. When they have sent the utilization certificate or audited certificate, not utilization, the auditor's AG's certificate, everybody's money has been given. The law itself says that after June 30th, 2022, there's no compensation cess. So we are not collecting. What we are collecting now is actually being collected to repay the debt that was taken during the COVID time. When there was no income to share, we had to borrow to give the states, and that is what is being collected now, and that's also should be ending by early 2026, which is another 7-8 months. So, on the GST or insurance, again, the GOM is looking at it, and they will come with a decision, and that can be taken up by the GST Council, so I'm not elaborating much on it. So, GST, again, like the temples, there has been this question about, are you levying GST on education and healthcare related items? Again, I want to explain, sir. Following are the exemptions that are already provided to the education sector. Services provided by an education institution to its students, faculty, and staff are completely exempt. Services by an education institution by way of conduct of entrance examination is exempted. The following services are also exempted. Services related to admission to or conduct of examination by such institutions are exempt. If provided to preschool or up to higher secondary schools, any service, such as transportation of students, transportation of faculty and staff, catering, including midday meal schemes sponsored by the central government or state government or the union territory, security or cleaning or housekeeping services performed in such education institutions are all exempt from GST. Supply of online educational journals or periodicals are exempt, and that is also provided for higher education institutions. Educational institution has also been defined. I just want to clearly say, so what is an educational institution? Defined as an institution providing services by way of preschool education, education up to higher secondary school or equivalent, education as a part of curriculum for obtaining qualification recognized by any law for the time being in force, and education as a part of an approved vocational education course. Similarly, sir, when it comes to health, GST is fully exempt on healthcare services provided by a clinical establishment, an authorized medical practitioner, or a paramedic, and healthcare services includes diagnosis for illness, injury, etc., in any recognized system of medicine in India, and that's been clearly stated in the Central Act as well. So there was this question about reduction of GST on agricultural inputs. I just again want to explain, sir. Seeds attract zero GST. There's no GST on seeds. 5% GST on fertilizers. Agricultural implements, manuals, manually operated or animal-driven, and hand tools attract zero GST. And then tractors attract 12% GST. Agricultural pumps attract 12% GST. So a proposal to reduce GST on farm inputs like tractors
from 12% to 0%. Farm inputs like drip irrigation system, other agricultural equipment, pesticides, fertilizers to 0% was placed on the 45th GST Council meeting held on 17th September 2021, but the Council did not recommend it then in 2021. I want to just put that on record, but of course, now the group of ministers is looking into it. So the items will be looked at by the GOM and they will take a call, sir. Sir, there were several other questions related to the budget, not so much on to the finance bill. So I'm not taking those, except for the proposal so there were just one thing on which, although it doesn't relate to the finance bill, I will seek your indulgence. I'd like to answer this. Issue raised by Sri Neeraj Maurya about benefits to the vulnerable sections, SCs, STs, OBCs, in the government initiatives. I will have to list them out, sir. Please give me that few minutes. Sir, under PM Kisan, around 76% of the farmers are SC, ST, and OBC. I'm not sure if Neeraj Maurya ji is here, but I can see his party members being here. I hope you convey this to him. Under PM Awas Urban, in the last decade, 1.18 crore houses have been built for the poor. Of that, 1.18 lakh crores is 1 crore and 18 lakh. 42 lakh have gone for OBCs, and 23 lakh houses have gone for scheduled castes. 60% of the houses under the PM Awas Yojana Gramin have been given to SC, STs. 33% of the loans under PM Mudra Yojana have gone to SC, ST, OBC-led enterprises. 70% of the beneficiaries under PM Swanidhi are SC, ST, OBCs. Stand Up India schemes, sir, which are helping the SC and ST entrepreneurs, 7,000 crores have been disbursed as loans for SC, STs. 65% of the loans under PM formalization of micro food processing enterprises is gone for SCSTs. And October 24, Honorable PM launched the Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan to address critical gaps in the social infrastructure, health, education, and livelihood development in 63,800 tribal villages. And then the Janjatiya Gaurav Divas in 2023, which was announced, PM Modi launched PM Jan Man for targeted support to 75 particularly vulnerable tribal groups for whom they are residing in 18 states and one union territory for safe housing, clean drinking water, education, health, road and telecom connectivity, electrification and sustainable livelihoods. I seek your indulgence, sir. I would not go further explaining more. For those non-budget related questions which honorable members have raised, the benefits of PLI scheme and so on, I'm not elaborating more. K.C. Venugopal ji asked about the pay commission. I take this opportunity to explain. Sir, our government has always been sympathetic towards the employees and pensioners' issues. For the first time, this government has implemented the full parity between pensioners of pre and post 7th CC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners
regarding parity been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of each Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. Now, as regards the amendment, I'd like to highlight, just give a brief background so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given employees for making their recommendations. The 6th Pay Commission report was submitted in 2006. In March 2008, which thereafter, after careful consideration, was accepted by the government then, March 2008. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th Central Pay Commission, was similar to the previous CPCs. So, it was accepted then by the government in March 2008. By this amendment that we are bringing, the government is actually restoring that which was accepted in March 2008, and the 6th Pay Commission recommendation therefore is being honoured and respecting it as an expert body. That is what is the objective and the aim of this amendment which is being introduced in this. So, 2008, Honourable Member Venugopal will know the government accepted it, and it is that which we are restoring to. Yes, because yes, I will. No, don't worry. I hear you. After 16 years. Oh, please, no. Please sit down. Honourable Member, please sit down. I'll tell you. Why is after 16 years, sir? Several court cases were going on. We had to wait for the verdict to come. And then we've gone back to saying, yes, now all the hearings are over, verdicts have been received. We're going back to honoring the decision which was taken in 2008. But in between there were litigation. How could I violate that? So, I'm not misleading the House. Honourable Member Venugopal should please go back to analysing if I said anything wrong and if this necessary amendment is reflective of a decision taken during their government. Thank you. Well, if you can cast out, yes, if you've done several wrong, we talk about it. We don't shy away. But this decision, which was, I don't need to hide. I'm saying it openly. I'm saying it before you. If it wasn't in the court, I would have done it earlier. Thank you, sir. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री डीन कुरियाकोस संशोधन संख्या 1 से 4। प्रश्न ये कि श्री डीन कुरियाकोस द्वारा प्रस्तुत संख्या 1 से 4 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में सर मूव नहीं कर रहे सर मूव नहीं कर रहे सर वालों के संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री सोगत राय संशोधन संख्या 65 से 72। I move my amendments. Page 4, line 77. प्रश्न ये कि श्री सोगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 65 से 72 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 25। Sir, I move the 1 minute, sir. I move the amendment, sir, number 25. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 25 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहे, जो विरोध में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में ना के मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड यथा संशोधित विधेयक अंग बना। प्रश्न 1 के खंड 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 4 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 26-27। So I move the amendment number 26 and 27. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 26 और 27 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में ना कहे मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 5 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 5 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 28 से 23। 33. So I move amendment number 28, 29, 30, 31, 32 and 33. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 28 से 23 को स्वीकृत किया जाए। 28 से 33 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है खंड 6 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष खंड 6 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष खंड 7 विधेयक का अंग बना। श्री सौगत राय जी संशोधन संख्या 73। Sir, I move amendment number 73, page 30, a substitution clause for lines 4 to 8. Sir, I would like the finance minister to clarify that the Americans are saying that the tariffs should be equalized. American team has arrived in Delhi. प्रश्न ये कि सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 73 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 8 और 9 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में ना कहे मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 8 और 9 विधेयक का अंग बना। सौगत राय जी संशोधन संख्या 74। I move amendment number 74 on page 30. प्रश्न है कि श्री सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 74 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 11 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 11 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है खंड 12 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 12 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 35 और 36। So I move the amendment number 35 and 36. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 35 और 36 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 13 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष खंड 13 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 14 से 16 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 14 से 16 विधेयक का अंग बना। श्री सौगत राय जी संशोधन संख्या 75। Sir, I move amendment number 75 on page 34. प्रश्न है कि सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 75 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे,
जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न ये खंड 17 से 19 विधेयकांग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 17 से 9 विधेयकांग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 37। I move the amendment number 37. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 76। Sir, before I move the amendment number प्रश्न ये कि 76, sir, सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 76 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों पर संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न ये खंड 20 यथा संशोधित विधेयकांग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 20 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 21 और 22 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 21 और 22 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Sir, I move the motion. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, अब संशोधन संख्या 38 को प्रस्तुत करें। 38। Sir, I move the amendment number 38. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 38 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 22A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 22A विधेयक में जोड़ा गया। प्रश्न है कि खंड 23 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष खंड 23 विधेयक का अंग बने। श्री डीन कुरियाकोस, श्री N.K. प्रेमचंद्र, संशोधन संख्या 6। Sir, my amendment is regarding changing in the income tax slabs table. That table may be accepted. I am moving the amendment. प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। सौगत राय जी, संशोधन संख्या 77। Sir, before I move amendment number 77 on page 38 lines 14 to 28, let me state प्रश्न that है कि सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 77 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वहाँ के, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 24 से 36 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 24 से 36 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 39। I move the amendment number 39. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 37 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 37 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना।
प्रश्न है कि खंड 38 और 39 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 38 और 39 विधेयक का अंग बना। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 78। सर, आई मूव अमेंडमेंट नंबर। प्रश्न ये कि सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 78 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न ये खंड 40 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 40 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Sir, I move the motion. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, अब संशोधन संख्या 40 को प्रस्तुत करें। Sir, I move the amendment number 40. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 40 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 40A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 40A विधेयक में जोड़ा दिया गया है। प्रश्न है कि खंड 41 से 46 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 41 से 46 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 41। Sir, I move amendment number 41. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 41 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 47 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 47 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 42 से 44। Sir, I move the amendment 42, 43 and 44. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 42 से 44 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 48 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 48 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें। I move the motion, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, अब संशोधन संख्या 45 प्रस्तुत करें। 45। Sir, I move the amendment number 45. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 45 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 48A 48B विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 48A 48B विधेयक में जोड़ दिया गया है। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 46। So I move the amendment number 46. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 46 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 49 यथा संशोधित विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 49 यथा संशोधित विधेयकांग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 47 और 48। I move the amendment number 47 and 48. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 47 और 48 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 50 यथा संशोधित विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 50 यथा संशोधित विधेयकांग बना। माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव प्रस्तुत करें। So I move the motion. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी अब संशोधन संख्या 49 को प्रस्तुत करें। So I move amendment number 49. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 49 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में वह संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 50A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 50A विधेयक में जोड़ दिया गया है। प्रश्न है खंड 51 से 58 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 51 से 51 विधेयक का अंग बना। श्री सोगत राय जी, संशोधन संख्या 79। Sir, I move the amendment number 79. The American said, आप थोड़ा ख्याल रखिए, वो हमारा सब टैरिफ कम कराएगा। प्रश्न है कि सोगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 79 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष हुआ संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 59 से 140 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 59 से 140 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें। So I move the motion. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी अब संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करें। So I move the amendment number 50. श्री N.K. प्रेमचंद्र, संशोधन संख्या 80। Sir, before moving the amendment, I would like to raise a very serious point of order. Under Rule 219 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, and under Article 110 and 117 of the Constitution of India. Sir, the proposed amendment by the Honourable Minister, by virtue of amendment number 50, is the amendment to the Finance Act and amendment to the validation of the Central Civil Service pension rules and principles of expenditure on pension and liabilities from the Consolidated Fund of India. That means this is a matter relating to the pension rules. It is nothing to do with Article 110, 1A or 1A to G and F of the Constitution of India. Sir, what is Article 110, 1A? So many times this House has debated on this issue. That is what is called a money bill. 110, 1A, it is very specific and clear that a money bill can be introduced only
in the House of the People, sir, I would like to quote 110 definition of a money bill. For the purpose of this chapter, a bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters. I would like to stress the word only. What are the matters? The imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax, the regulation of the borrowing of money, the custody of the consolidated fund or contingency fund, the appropriation of monies out of the consolidated fund of India, declaring any expenditure to be expenditure charged on the consolidated fund of India, and the receipt of money on account of the consolidated fund of India. And the last portion, that is a portion that is G, any matter incident to or any of the matters specified in subclause A to F. Sir, this is the provision which is invoking by the Honourable Minister so as to put this amendment. There, I would like to relay on Kaulan sector. It is very clear that in Kaulan sector, it is specifically mentioned. Sir, one second. Regarding the Kaulan, and it is updated version. It is also updated version. It is very clearly stated that money bill and financial bill is well distinguished. So I will quote one page 792 of the Kaulan sector. However, finance bill. However, it does not contain any provision intended to make permanent changes in the existing laws unless they are consequential upon or incidental to the taxation proposals. I would like to underline, unless these are consequential upon or incidental to the taxation proposals. Sir, here what is the amendment? The proposed amendment is, that is already the ministry has replied. Sir, one second, that is a matter. Through this amendment, I would like to highlight the matter. The thousands and lakhs of pensioners in the country, they are entitled to get the pensionary benefit in the revised Central Pay Commission. Suppose after 2026, the last pay commission. Sir, one second. Suppose it is not being applicable to the. So my point is, sir, this is, suppose if you are allowing this amendment to be incorporated in the Finance Bill 2025, the character of the money will be changing. That is not applicable. There is a Supreme Court judgment of 2019. It's very specific. So the point of order may be clarified and it may not be allowed. That is my point of order. And subsequently, I will move the amendment. N.K. प्रेमचंद्रन जी ने जो विषय उठाया है, रूल्स 219 की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. रूल्स 219 में गैर कर प्रस्तावों को शामिल करने की संभावनाओं को नकारता नहीं है. इसलिए एक वित्त विधेयक में गैर कर प्रस्तावों को भी शामिल किए जा सकते हैं. अतीत में कई बार ऐसी हो चुकी और ये परंपरा भी रही है. इसलिए मैं माननीय प्रेमचंद्रन जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको निरस्त करता हूं. प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 80 को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें,